स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर नेम इज प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस जो कि पोजीशन बताते हैं नाउन का, प्रोनाउन का. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी स्टार्टर एक्टिविटी आपको दी गई है. सी द पिक्चर एंड फाइंड एंड राइट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि इनकी पोजीशन क्या है. जैसे कि फर्स्ट वन, अ कैट डैश द कार्टन. अ कैट इज इन द कार्टन. ओके, नेक्स्ट वन, अ बुक डैश द टेबल. अ बुक ऑन द टेबल. ओके, now let's start the chapter. So the first topic is preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with some other words in the sentence. अब preposition क्या है? preposition एक ऐसा शब्द है जो कि noun से पहले लगाया जाता है, pronoun से पहले लगाया जाता है और जो कि relation बताता है उसको उसका दूसरे शब्दों के साथ, ठीक है, other words के साथ, तो उसे हम preposition बोलते हैं, यानी कि जो position बताता है. Okay, for example, the cat is on the table. Next one, he goes to bed at 10. Now let's know about kinds of prepositions. There are three kinds of prepositions. Total three kinds of prepositions है. जैसे कि first one है preposition of time, next one preposition of place or position, next one prepositions of movement or direction. Okay, let us learn about these prepositions in detail. So the first one is preposition of time. तो इसमें सबसे पहला word आपको दिया है at. At is used for a certain moment or point of time. At जो है वो certain moment या point of time के लिए हम use करते हैं. For example, I reached school at 8 a.m. Okay. Next one, at is used for a specific place having a descriptive number, house number or ownership. At को हम use करते हैं एक specific place के लिए जिसमें एक descriptive number होता है, house number होता है या ownership होता है. For example, we had a vacation at her grandfather's villa at 10 Rumble Street in UK. Now next one is on. On is used with days and dates. On का use हम करते हैं days और dates के साथ. For example, she reached Delhi on Monday. Okay. Next one is in is used with parts of the day, month, year, season. इनको हम यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ, सीजन के साथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी टेक आवर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट वन, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. नेक्स्ट थिंग इज in is also used with the future tense to show the period in which an action will happen. in जो है वो फ्यूचर टेंस के साथ भी यूज होता है, ठीक है, ताकि हम दिखा सके कि कौन से पीरियड में वो एक्शन हुआ था. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग इन 2 hours. ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी इन एट द एंड ऑफ. इन का मतलब है इन इज इक्वल टू एट द एंड ऑफ. ओके, देन आफ्टर दैट विद इन, बिफोर द एंड ऑफ मतलब एंड से पहले. So here you can see the example. We will finish the project in a week. ठीक है, when a week is over यानी कि end में. Next one, we will finish the project within a week. Within a week का मतलब है before a week is over. ठीक है, over होने से पहले. Okay. Now here you can see the next word, that is since. Since is used with the point of time at which an action started. सिंस हम यूज करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब एक्शन शुरू हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट वन, फॉर. फॉर इज यूज टू सजेस्ट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन. पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो एक्शन अभी भी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम. From refers to the starting point of an action. ये refer करता है starting point of an action को. Very often it is used with to or till, until. Very often ये use करा जाता है to के साथ या फिर till और until के साथ. For example, our school will be closed from 5th July till 20th July. Okay. Now student, इसी से related आपको exercise दी गई है जो कि आपको complete करना है. Now the next topic is preposition of place or location. First one is at. At denotes a specific place, house number और specific ownership by a person. अब at जो है वो specific place को denote किया गया है, house number को या ownership को. जैसे कि for example, Raj lives at 15 हरिनगर.
Next is in. In refers to the name of a container, place, area to indicate where someone or something is. इन रेफर किया गया एक जगह को, एक कंटेनर को, ठीक है, जहां पर कोई रहता है, इंडिकेट किया गया है किसी को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पेन इज इन द ड्रॉर, कहां पर है वो, ड्रॉर के अंदर है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन। ऑन इज यूज्ड विद सरफेस एरिया टू इंडिकेट वेयर समवन और समथिंग इज। ऑन एक सरफेस एरिया का बताया गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग ऑन योर हेड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अपॉन। अपॉन shows position of motion when one thing moves from one place to another। ये पोजीशन ऑफ मोशन को शो करता है जब एक चीज जो है वो मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर, ओके। नेक्स्ट वन बिटवीन। बिटवीन इज यूज्ड विद टू पर्सन्स और थिंग। ये दो पर्सन और थिंग के साथ यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अनिल एंड साहिल। नेक्स्ट वन इज अमंग। अमंग इज यूज्ड विद मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। ये दो से ज्यादा पर्सन या चीज के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज द एल्डेस्ट अमंग ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज अबव। अबव refers to the places that is higher than something or higher than someone or something। अबव यूज किया गया है उस जगह के लिए जो कि हायर है, ऊंची ऊंचाई में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ चीफ मिनिस्टर इज अबव अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मतलब उनसे ज्यादा पावर में है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज ओवर। ओवर ऑल्सो refers to a place that is higher than someone or something। ओवर कैन ऑल्सो मीन कवरिंग और वर्टिकली अबव, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द प्लेन फ्लाइज ओवर द सी, ओके। नेक्स्ट इज बिलो। Below means lower than someone or something. It is preferred where one thing is not directly under another. जैसे कि for example the sun disappeared below the horizon. Next one is under. Under also means lower than someone or something. It also means vertically below. Vertically below इसका मतलब है it also has the idea of contact. For example, he was wearing a red t-shirt under his sweater. Now here you can see student, below is also used in measurement to suggest the idea of being lower than. Okay, below को measurement में भी use करते हैं ताकि हम suggest कर सके idea of being lower than. Okay. Now here you can see the example. The temperature was 10 degrees below normal. Okay. Now student इसी से related आपको कुछ exercise दी गई है जो कि आपको complete करना है, ठीक है। Now the next one is preposition of movement or direction. So first one is to. To has the sense of destination towards the direction. Towards of direction. ठीक है, to जो है वो destination को refer किया गया है. For example, they went to the park. Okay, reach the park मतलब, ठीक है। Next one है into. Into refers to the movement towards the interior of something. Into मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना. For example, the boy dived into the pond. Next one is at. At denotes the idea of hitting. At जो है वो idea of hitting को denote करता है. For example, the boys threw stones at the nest. Now next one is for. For suggests the beginning of movement. किसी movement की शुरुआत होना, ठीक है। For example, he left for office. Now next is against. Against denotes the pressure or contact. Against जो है वो denote कर रहा है pressure को या फिर contact को. For example, he put the ladder against the wall. Now next one is from. From is used with the point of departure. From जो है वो point of departure के साथ use किया गया है. For example, he has already gone from school. Now next is off. Off shows separation. It is used in the sense of from the surface of, down from something. Off जो है वो separation को show कर रहा है. For example, he fell off the motorcycle. Now next is out of. Out of is the opposite of into. Out of जो है वो opposite है into का, यानी कि उल्टा है. It means from the interior of. इसका मतलब है अंदर से बाहर की तरफ आना. Okay. For example, he pulled a pen out of his shirt pocket. Now next is along. Along is used to state that someone or something is moving in one direction. कि कोई ऐसी चीज है जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है. For example, we walked along the beach, along the sea beach. Okay. Now next is across. Across is used to state the other side of someone or something. दूसरा तरफ, ठीक है, someone or something. जैसे कि for example, my uncle lives across the
street. Now next is round. Round is used when we refer to the movement in circle. Round refer किया गया है the movement in circle. For example, the children move round the tree. Now next is up. Up is used to talk about movement towards the higher position. ऊपर की तरफ जाना. For example, he climbed up the stairs. Next one, down. Down is used to talk about movement towards a lower position. नीचे की तरफ जाना. For example, the children climbed down the hill. नाउ स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर. बाय.